प्रोडक्ट स्ट्रेचिंग, ठीक है, प्रोडक्ट फिलिंग, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स में व्हाट वी डिस्कस, प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ, प्रोडक्ट मिक्स width, product consistency, as well as we discussed about one more thing, that is product depth, product mix depth, length, width, and the last one is product consistency. So anyone have any doubt in this topic? Anyone have any doubt? Please raise your hand. We already completed these things, because today I'm going to start with brand. What is brand? What is the meaning of branding? Why the companies are using such branding? What is the meaning of brand equity? We are going to do these topics. Okay. See, so product line depth, product line mix, product line length, and product consistency. So product line जो length होता है, इसका मतलब क्या होगा? See the screen carefully. This is a, for example, this is a Hindustan Unilever का एक product line हम देखते हैं, ठीक है? So the first one यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम soap ले, that is a bathing soap we can take. The second one is we are taking the laundry. The third one we are taking beverage, and fourth we are taking cosmetics, right? So if in the bathing soap, the number of soaps are so many, for example, there is a Dove, for example, there is a Lifebuoy. So this is known as product line length. It is known as product line length. The number of products present in one type of product category, it is known as product line length. इसको क्या बोलेंगे? Product line length. What is product mix width? Length का हिंदी में मतलब क्या होता है? That is लंबाई. So in short, एक टाइप के प्रोडक्ट में जितने तरीके के प्रोडक्ट अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल इट इज अल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट लाइन लेंथ. क्लियर? सबको समझ आया व्हाट इज लेंथ? When we are talking about product line width, what is width? Just type of product categories present in a one kind of company. यानी कि जितने टाइप के आपके प्रोडक्ट कैटेगरी प्रेजेंट है, here the product mix width की अगर हम बात करें तो here there are four categories. The first one is bathing soap, second one is laundry, third one is beverage, and fourth one is cosmetics. So this is known as product mix width. Types of product category present in a company, it is known as product mix width. The number of products present in a single type of product, that is product mix length. Okay, that is product mix length. Now, what is product mix depth? For example, we are able to see that in Lifebuoy, for example, okay, just for example, in Lifebuoy, if there are multiple varieties, one, 3, 3, 8, 2. Okay, so we were on the topic. So in the bathing soap, the number of products type, जितने भी टाइप के प्रोडक्ट्स आपकी bathing soap में present है, number of alternatives which is present, that is known as product length. If we are talking about the product mix की अगर हम बात करें तो number of product categories, जैसे कि मान लीजिए bathing soap का पहला category, दूसरा है laundry का category, third one is beverage, fourth one is cosmetics. So this is product mix width. This is product mix width. If we are talking about the depth, product mix depth की अगर मैं बात करूं, so the number of product present in one type of product. यहाँ ये प्रोडक्ट कैटेगरी है, ये एक टाइप का प्रोडक्ट है, तो लाइफबॉय में अगर हमारे पास वेरियस ऑप्शन है 1, 2, 3, जैसे मान लीजिए कि ब्लू लाइफबॉय, दैट इज फॉर स्किन केयर, द सैंडलवुड लाइफबॉय, दैट इज फॉर द नेचुरल इंग्रेडिएंट इज देयर. सो द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स available in one type of product, I am not talking about the category, one type of product, that is product mix depth. ठीक है, डेप्थ का मतलब होता है गहराई. अच्छा, एग्जाम्पल में देखो कि अब इफ यू आर टेकिंग अ लेज, अगर हम लेज का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो लेज में वी हैव मल्टीपल वेराइटीज, ठीक है, मल्टीपल फ्लेवर वी हैव, राइट? ओनियन फ्लेवर इज देयर, अनियन फ्लेवर इज देयर, सेकेंड वन इज like chili flavor is there, pepper flavor is there. There are multiple varieties, so that is a part of, we can say, product mix depth. In one type of product, when there are multiple type of products available, ठीक है, that is known as product mix depth.
the number of products available in a product category, that is product mix length. The number of product categories available in a one company, that is product mix width. I guess clear हो गया होगा. Now the point is, what is product mix consistency? So consistency is related that whatever product you are making, how much similar they are. Just example के लिए, I already told you about Sudha. Like Sudha is selling the product basically of the milk related product. Whatever they are selling, that is made of milk, right? So their product consistency is very high because whatever product they are making, that is related with only one product. For example, if we are taking the two things, milkshake and dahi, yogurts, both are made up of milk. So in that situation, the product mix consistency is high. प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी तभी हाई होगा जब आपके प्रोडक्ट में सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होगा. इफ द प्रोडक्ट इज नॉट सिमिलर और अलाइक, then we can say that the product consistency is low. So we can take the example of Sudha, we can take the example of Nestle as well. Whatever chocolate they are making, made up of the cocoa beans, right? So the product consistency in the case of chocolate, that is very high. Sudha में भी हम ले सकते हैं कि the product consistency is very high because majority of their product, whatever they are offering, either that is paneer, that is Sudha special, that is peda, whatever they are making, that is made up of milk. So in that situation, the product type is very much similar. The product is very alike. So the product consistency is high. If the product is not similar, then in that situation, the product consistency is very low. जैसे एग्जाम्पल के लिए गोदरेज आप लोग सब जानते हैं, गोदरेज कंपनी का नाम आपने सुना है. व्हाट दे आर मेकिंग, दे आर बेसिकली मेकिंग द फर्नीचर, वी कैन से. और सबसे अर्लियर जब हमारे पेरेंट्स के टाइम की बात करें तो वो कहते थे कि गोदरेज का अलमीरा इज वेरी मच गुड, ठीक है, बहुत ही ड्यूरेबल होता है, इकोनॉमिकल होता है, सो मेनी थिंग्स दे आर सेइंग. सो बट द गोदरेज इज आल्सो मेकिंग सोप भी बनाते हैं वो. So we can say the two products type they are making, that is very much, their consistency is very low because where they are making the furniture and one side they are making soap, so they are not related as such, so their product consistency is very low. जितना ज्यादा प्रोडक्ट आपका मैच करेगा, प्रोडक्ट टाइप मैच करेगा, उतना ज्यादा कंसिस्टेंसी हाई होगा. आगे बात समझ में? everyone you all are able to get me whatever I elaborated? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what is product mix length? What is product mix width? What is product mix depth? What is product mix consistency? I guess आप लोगों को ये सब कुछ clear हो गया होगा. ठीक है? Let's move toward the brand. One of the interesting topic in marketing. तो brand क्या होता है? So brand is a logo. See, I have one mask. ठीक है? So I can show you that here in the mask gear is written, gear. ठीक है? So it is a kind of brand. क्या होता है? It is a logo, it is a name, it is a color, it is a symbol which is representing the company and which is helping to identify the product कि ये product किससे belong करता है. For example, I have one charger. ठीक है? I have one charger and charger में लिखा है Nokia. I understand that you all are not able to see it properly. So the Nokia is a word which is basically identifying, its name is identifying that this Nokia is basically famous for mobile phones. True? So brand जो है, that is helpful for identifying the product type. It is a identification of your company. ठीक है? Logo, symbol, name, color combination, these all are known as brand. Now the question arises that what is the difference between trademark and brand? So trademark is a registered brand. आपका जब brand registered हो जाता है, then it will become trademark. No other company can copy that same name, same brand to sell their product. अपने प्रोडक्ट को, सेम टाइप के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो सेम नाम को यूज नहीं कर सकता है. जस्ट इमेजिन, आप लोग को पिज्जा बहुत पसंद होगा. आई गेस सबको पिज्जा बहुत पसंद है. Yes, ma'am. पसंद है, ठीक है. जस्ट इमेजिन, वी ऑल नो that there are multiple options present for pizza, but one of the best is Domino's for us.
Just I am not advertising, but I am saying, just take it as an example. So for me, Domino's is one of the best company for pizza, but just imagine if I'll see one more Domino's in the market, right? But that is different from the other one, but the name is same. What will happen with the consumers? क्या होगा consumers के साथ? What will be happen? Are you able to understand that which one is the suitable one? कौन से पिज्जा फ्रूट्स हम खाते थे, इसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा? The consumer ma'am. will be confused. Consumer क्या हो जाएगा? Confused हो जाएगा कि हमने पहले कल जो पिज्जा खाया था वो कौन से स्टोर से खाया था, and which one is the real one, which one is the provided authenticated product, we don't know, right? So trademark is a we can say that is a registered brand in which the company is registered and no other company can use your name, your brand for selling their product, right? तो कोई भी आपके नाम को कॉपी नहीं कर सकता है. So all the brands are not the trademark, but all the trademarks are brand. सारे ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते हैं, लेकिन सारे ट्रेडमार्क ब्रांड होते हैं. यानी ट्रेडमार्क वही बनेगा जो ब्रांड होगा, जिसको रजिस्ट्रेशन जिसका करवाया जाएगा. जैसे ब्लूप्रिंट हो गया मैम ये. हाँ, it is a kind of, we can say exactly that no other company can copy your company. हाँ, but still I just want to give you the example of the incident that there are so many companies, not exactly companies, that there are local manufacturers who are doing this. आपने कभी देखा होगा कि Adidas is one of the renowned company for sports clothes or track suits. True? Adidas है ना, for shoes and for track suit, that is a famous brand for shoes especially. ठीक है? And we are also able to see the Adibas in the market. True or not? Yes, ma'am. Yes ma'am. So what is the difference between both of these? That Adidas is the obviously the original one, and the Adibas is the spurious product. What is the spurious product? I just want to tell you. The spurious product where we are basically taking the name of the original or renowned brand, and we just try to confuse the consumer, and even consumers are not able to understand that which one is the original and which one is the fake. And this is very much spreaded already. This kind of things are spreaded in rural areas because the people are not able to read the name properly, but they are identifying the product by color. Even the people are saying Lifebuoy lal wala sabun dena, right? So they are not taking the name Lifebuoy. but exactly. So the spurious products are basically those products. These are the fake products, we can say. These are the fake products, which is basically affecting the original company, and they are basically cheating. They are cheating and they are doing the fraudulent activities with the consumers. So brand जो है वो आपका एक आपके originality को दिखाता है, आपको identify करता है, आपके product की quality को भी दिखाता है. ठीक है, लेकिन अब now the question is, brand तो I guess clear हो गया होगा. Logo, name, symbol, these are the brand. This is the identification of the company. We are able to understand that this company is selling this product. So identification, name. ठीक है. Now what is trademark? I guess clear हो गया होगा सबको, समझ में आ गया? हाँ. Yes ma'am. Yes. चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ. ब्रांडिंग. What is branding? Can anyone tell me that if I am putting ing after brand, then the meaning is little bit changed. What is that? What is branding? What is branding? What is 158? Branding, that it is a name, term, sign, symbol or design or a combination of these things to identify the goods and services of identified seller. यानी जो seller है उनको identify करने में help करेगा कि ये particular seller क्या product को sell करते हैं. तो that definition is given by AMA. When we are talking about branding, what is branding? So branding is we can say it is an activity which is done by the company. It is an activity, it is a process which is done by the company to choosing the name, brand and everything related with their product. How they are doing the branding, how they are advertise their product in the market, what kind of symbols and colors they have to take
matlab branding is a decision oriented stage, we can say, which is done by the company, and they will make for their product. Like for example, if I am going to make for example, if I am going to make a specs, right? So what name I am going to choose for this, what kind of color combination I can use, how I am going to advertise about my product, how I am going to influence my customers toward my product, what different thing I am providing to the customers. So all these decisions are going to take under the branding. So branding is a activity or process which is done by the company related with their logo, symbol, product, logo, symbol, name, right? And how they are doing how they are advertising it, what kind of activities they are doing. So ये सारी चीजें आपके आ जाएंगी ब्रांडिंग में, ठीक है? So what is branding? I guess clear हो गया होगा. What is branding? Clear हो गया? Everyone? Yes, ma'am. Okay. If you want to write on this, you can write about it. That branding क्या है? What is branding? ब्रांड तो समझ में आ गया. तो ब्रांड के लिए आप AMA, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, और आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, कोटलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा जो गिवन और जो आपका डेफिनेशन है, जस्ट राइट अबाउट दैट इन डेफिनेशन, ठीक है. ब्रांडिंग इज एन एक्टिविटी, ब्रांडिंग जो है इट इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस विच इज डन बाय द कंपनी फॉर एडवर्टीजमेंट, फॉर चूजिंग द नेम, टर्म, सिंबल, और बोल सकते हैं दिस इज ब्रांडिंग, जहां हम एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, अपने ब्रांड का नाम क्या रखेंगे, सब कुछ सारे डिसीजंस दैट इज टेकन अंडर ब्रांडिंग. ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रांडिंग? व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू डू ब्रांडिंग? क्यों ब्रांडिंग करना चाहिए? क्या जरूरत है ब्रांडिंग करने का? Can anyone tell me that why branding is required? Why it is important? Why it is important? Can anyone tell me about it? Okay, please write about the significance of branding. So a brand is first point is a brand helps buyer, a brand helps buyer, a brand helps buyer in identifying the product, that they like or dislike. A brand helps buyer in identifying the products that they like or dislike, It is a benefit for the buyers. यानी buyers के लिए क्या benefit है, seller के लिए क्या benefit है. If you want to write, you can write about it कि क्या क्या चीजें फायदा, क्या क्या buyer कौन होगा, consumer, जो product को purchase कर रहे हैं, उनके लिए क्या benefit है branding का. तो सबसे पहला जो benefit है, the first benefit is a brand helps buyer in identifying the product that they like or dislike. यानी कि वो ब्रांड जो है उनको हेल्प करेगा समझने के लिए कि उनको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा प्रोडक्ट उन्हें पसंद है और कौन सा प्रोडक्ट पसंद नहीं है. ठीक है, मार्केट में से बिस्किट खरीदना है, मार्केट गए और हमने खरीद लिया 50-50, पसंद है 50-50, ब्रिटानिया का बिस्किट पसंद है, नहीं पसंद है मुझे और कोई दूसरा बिस्किट. ठीक है, मान लो मुझे पाम का बिस्किट नहीं पसंद, तो आई कैन से दैट आई कैन नॉट एबल टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ब्रांड, राइट? So it is going to help you to choose which product you want to buy. So the first significance or importance of branding is for buyer is to brand helps the buyer to identify the product, कौन सा product खरीदना है identify करने में it is helpful. The second one is okay, I just want to know so it is related with the same thing, like the brand facilitate the identification of the product, that which product we need to purchase at the point of purchase in the shop. If we are visiting, which product is suitable for us, how we are identifying it through the brand name. Okay, so the first point is brand facilitate the identification of the product, that is helpful for like or dislike, that is helpful for choosing the product. Okay, I guess first point is clear. Now the second one is brands offer a measure of protection to consumers because they usually identify the manufacturer or supplier. So brand jo hai, it is helpful for protecting the consumer because the name is helpful for you to identify that this one is the original product, and this is going to be helpful for identifying the manufacturer or supplier from where this product is made,
who is the manufacturer, what company is this. So for identifying the manufacturer or supplier, the branding is important. So we can say that brand also offers the measure of protection. 13003. Second one is brand offers a measure of protection to consumers because they usually identify the manufacturer or supplier. So I just said you about one incident about this curious product, that what is going on in the rural areas and what is basically done by the so many local manufacturers, what they are doing. So here, the brand name is helpful for you for protecting you from the fake product, because of the name or from the logo you will identify that this is of this company or this manufacturer, right? So this is for the protection purpose also, the branding is important. The second one is for choosing the product, which product is suitable for you. Branding is important. So we are here talking about the significance to the consumers, यानी consumers को क्या क्या फायदे हैं. Now the next one is what is brand, now the next point of the significance is brand gives consumers a greater freedom of choice in where they buy the product. Like brand is helpful for choosing the product, which I already elaborated in the first point. कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है इसको आइडेंटिफाई करने में भी ब्रांड्स हेल्प करता है आपको. जैसे कि एग्जांपल के लिए, if you want to purchase the product of, like for example, if you want to purchase product from Bikaner, so the Bikaner is a brand which is helpful to understand कि हाँ ठीक है ब्रांड है, और सेकेंड चीज अच्छा फूड मिलता है यहाँ पर, ठीक है, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, वेजिटेरियन प्रोडक्ट मिलता है. So the brand is helpful for making choice, ठीक है, it is helpful for identifying the product and as well as it is helpful for consumer protection. ठीक है. Next one is brand is helpful for understanding the product difference, ठीक है, या फिर it is helpful for product differentiation. Which product is suitable, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल है आपके लिए, कॉम्पिटिटर्स कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप जो है वो बेटर वे में चूज कर सकते हैं और दूसरे कंपनी के साथ आप कंपेयर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, ठीक है. लाइक एग्जांपल में आई परचेज दिस spec from Lenskart. So how I am differentiating it with the Titan, like Titan, whatever they are basically taking the amount that is very high, ठीक है, but as comparison to Titan, this product I got in a very less price. So because of the brand only, I am able to compare the two products, ठीक है. So comparison and the product differentiation we can do it through brand, ठीक है, brand name के through we can differentiate the product. Next one is brand can serve as a warning against repeat purchase if the first purchase of the use of the product is proved disappointing. Yes, Ankit. ब्रांडिंग का आपने जो अभी Okay. So the next point is the brand can serve as a warning against the repeat purchase. See, for example, I am just giving it as example. I am not giving a surety. Always remember, I am taking the examples of so many companies. I am not saying that this is right. I am just taking it as an example. जैसे example के लिए, I purchase this marker, ठीक है, and I purchase it of the Camel, right? I purchase it of Camel. And after using it, I understand that this is not the better product for me. It is not able to satisfy my utility. It is not able to satisfy me. It is not according to my expectation. So once I purchase the product of this brand, again, if I'm going to purchase the marker, I will be aware that I don't need to purchase this product again. So because of the brand identification only, I am able to understand कि last time मैंने यही product खरीदा, अब मुझे ये product नहीं खरीदना है. So for protecting the consumer, in short, we can say, and for helping us out, the next time we are not purchasing the same bad or poor quality material. Okay, so it is basically helpful for purchasing for the next time कि किसका खरीदे और किसका प्रोडक्ट नहीं खरीदे. ठीक है. Next one is brand also simplify the consumer problem solving and information processing. Like we are able to understand so many things because so many information is there on the particular product. So we can say that it is also helpful for giving us information about the product, right?
Next one is brand is also helpful for, we can say, ठीक है, काफी, I guess there are so many points even, but I think 7 or 8 points are enough, more than enough. Now the next one is what is the significance of brands to the firm, यानी कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है, फर्म्स के लिए क्या बेनिफिट है. Let's start with this topic. को डाइवर्सिफिकेशन क्यों मिल रहा है? Why? Because of the brand identification, the trademark. जैसे एग्जांपल के लिए the sign, the right side, for example, just see it on the screen. The right side, the stick, is going to help you to identify that this product is Nike. True or not? ठीक है ना, नाइकी पता लग रहा है. और ब्रांड का जो ट्रेडमार्क है, ये क्या है? ये नाइकी का ट्रेडमार्क है, ये शूज का वो ट्रेडमार्क है जो आपके प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है. किससे? बाकी के अलग, एडिडास से, रिबॉक से, प्यूमा से कर रहा है ना, अलग बना रहा है इसको. So in short, we can say कि brand trademark also facilitate the product diversification in respect. Like according to the, we can easily able to compare it with the other product. ठीक है, Adidas से we can compare it with the Puma and all. ठीक है. Next point is, मैं short में सोच रही थी लिखवाने के लिए. It also promote the cooperation with the intermediaries के साथ cooperation. Intermediaries कौन होते हैं? Who are basically selling the product to the consumers. Like for example, the manufacturer are selling the product to the wholesaler first, then wholesaler to the retailer to the consumer. This is the normal supply chain I am saying. ठीक है. So the cooperation among the intermediaries is possible because of the brand. It can also facilitate the promotional efforts. एडवर्टीजमेंट में भी हेल्पफुल है आपके ब्रांड के लिए. आप ब्रांड को दिखाकर शो कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर मेरा प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है, लाइक दिस. इट और एक गुड ब्रांडिंग का क्या क्या इसेंशियल्स होना चाहिए. व्हाट इज द बेसिकली इसेंशियल्स ऑफ अ गुड ब्रांडिंग? किस तरीके से गुड ब्रांडिंग होना चाहिए? पहली चीज कि कोई भी ब्रांड जो होता है, ब्रांड नेम जो होता है, वो इजी टू प्रोनाउंसिएट होना चाहिए. प्रोनाउंसिएशन जो है उसका इजी होना चाहिए. एग्जाम्पल में अगर मैं एक बहुत लंबा आपको नाम दे दूं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि इतना लंबा नाम है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ब्रांड का. ठीक है, तो यहाँ पर इतने लंबे नाम को पढ़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. तो हमेशा याद रखिएगा कि शॉर्ट नेम यूज कीजिए, छोटा सा नाम यूज कीजिए, प्रोनाउंसिएशन में जो बोलने में इजी हो. ठीक है, रिलेटेड विद द लाइफ हो, मतलब आसपास जो चीजें उससे रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो. जो एकदम अलग थलग वैसा नाम आप मत दीजिए, then it is very much difficult for us to remember. शॉर्ट हो, प्रोनाउंसिएशन इजी हो, इजीली याद रहे, रिमेम्बर हो सके, और अट्रैक्ट करे. यूनिक नाम भी आपको यूज करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप जो नाम यूज कर रहे हैं यूनिक या फिर कुछ 2-3 बोल सकते हैं पॉइंट्स को लेते हुए कोई नाम बनाइए. सो रिमेम्बर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन में इजी होना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए कंज्यूमर को, और आपके प्रोडक्ट की इमेज को भी शो करे. वो ऐसा आप ब्रांड नेम यूज कीजिए. ठीक है. So these are the essentials of good branding. इसको लिख लो. What is the essentials of good branding? Write it. After that, I'll send you the notes of significance of branding to the buyers and sellers. ठीक है, इन दोनों का significance का notes I will send you. Please write about it. Essentials of good branding. I am just using 1 or 2 words for 1 point. ठीक है, सिर्फ बहुत शॉर्टकट में मैं लिखवा रही हूँ, इसको लिखिए. Essentials of good branding. Essentials of good branding. The first one is easy pronunciation. Easy pronunciation. Easy pronunciation. Second one is easy to remember. Easy pronunciation, easy to remember. The second point is easy to remember. याद easily हो जाए. Easy to remember. Attract attention. The third point is attract attention. Attract attention. Attract attention. Attract attention. Next one is suggest company name or product image. Suggest company name. Suggest company or product
image. Suggest the company or product image. Sometimes we are very much choosy. I'll explain it about that, how we are selecting the name. For example, we are taking example of Ponds or Fair Lovely. So Fair and Lovely is something which is related with the name, जिससे हमको पता लग रहा है कि गोरा होने वाला प्रोडक्ट, क्लियर होने वाला कोई प्रोडक्ट है. Lovely is related with beauty, right? So we all know that Fair and Lovely is one of the cosmetic cream which is used by so many people. So somehow the name is suggestive होना चाहिए, जो आपके प्रोडक्ट के बारे में भी बता रहा हो. ठीक है? Like Oswald, it is one of the famous brand for woolen. ठीक है? So we can say that the product is showing the, या फिर it is suggestive, in a suggestive nature का होना चाहिए, जो आपकी प्रोडक्ट की इमेज को भी शो कर रहा हो. Next one is easy to recognize. Easy to recognize. What is the meaning of recognition? Recognition का मतलब होता है पहचानना. ठीक है? So easy to recognize. Why I am saying this? Because हम ब्रांड को देख करके उसको समझ जाते हैं कौन सा पर्टिकुलर ब्रांड है. उसको या मतलब वो रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लेना. ठीक है? पहचान लेना. रिकॉग्निशन इजी हो, इजी टू रिकॉग्नाइज. ठीक है? इजी टू रिकॉग्नाइज. अब और क्या होना चाहिए? नेम शुड बी रजिस्टर्ड. नेम शुड बी रजिस्टर्ड मतलब इट इज ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए. अगर वो रजिस्टर्ड है तभी कोई और कंपनी उसको कॉपी नहीं करेगा. अदरवाइज इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, यू आर नॉट रनिंग अ रजिस्टर्ड नेम कंपनी, देन एनीवन कैन कॉपी कोई नहीं कर सकता है ना मैम. हाँ बिल्कुल, कोई कॉपी नहीं करेगा. नो वन कैन कॉपी इफ योर ब्रांड इज अ ट्रेडमार्क. मैम कॉपीराइट लगा देंगे ना फिर. हाँ, इट इज. देखो मैं तुम लोग को एक बात बताती हूँ. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांड नेम, लेट्स मूव. द नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रांड जो होना चाहिए दैट शुड बी रजिस्टर्ड होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रांड ऐसा होना चाहिए, ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जिसको हम इजिली ट्रांसलेट कर पाए. The brand name should be like that we can easily translate it. उसको बदल सके, दूसरे कंट्री में उसका नाम लेना हो तो उसको चेंज कर सके. ठीक है? ट्रांसलेशन इजी हो. प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, प्रोडक्ट नेम दैट कैन बेसिकली शोइंग द बेनिफिट्स ऑफ दैट. ठीक है? बेनिफिट्स भी, उसके नाम जो है उसके बेनिफिट्स को भी शो करे. ठीक है? तो जैसे वैनिश, द नेम इज सजेस्टिंग that the stain is going to vanish if you will use this product, right? So benefit suggest करे, type suggest करे, ऐसा भी आप नाम यूज कर सकते हो. pronunciation easy हो, recognition easy हो, purchase करने में आपके लिए easy हो, trademark registered हो, trademark हो. ठीक है? और उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सके. So these are the essentials of good branding. मतलब एक गुड ब्रांड का ये सारी चीजें जरूरत है. ठीक है? So I guess आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सारा जो भी मैंने बताया. यस मैम. ओके, यस सब मैम. लोगों ने लिख लिया अभी. ब्रांड इक्विटी इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द वैल्यू ऑफ योर ब्रांड इन द मार्केट. जैसे ब्रांड का मार्केट में वैल्यू क्या है. जैसे अभी भी एग्जांपल मैं गोदरेज का मैं बता रही थी आपको कि गोदरेज अगर हम एग्जांपल लें, आज भी उसका ब्रांड वैल्यू बहुत हाई है. द पीपल आर स्टिल गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट ऑफ गोदरेज. व्हाई? Because the value of that brand is high, the people are able to recognize that brand in the market. So जितने लोग आपके ब्रांड को जानते हैं, जितने लोग आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज करते हैं इन अ पॉजिटिव वे, उतना ज्यादा आपका ब्रांड इक्विटी हाई होता है. ठीक है? एक पावरफुल ब्रांड जो होगा उसका हाई ब्रांड इक्विटी होगा. जो पावरफुल ब्रांड नहीं होगा उसका लो ब्रांड इक्विटी होगा, यानी उसकी वैल्यू कम होगी. ब्रांड इक्विटी जो है एक ऐसा बोल सकते एक तरीके का आपके हेल्पफुल है आपके लिए. किस चीज के लिए? फॉर डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम द अदर ब्रांड. मतलब ब्रांड इक्विटी अगर आपका हाई है ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे अलग दूसरे प्रोडक्ट के साथ. आप बहुत क्लियर रहेंगे कि मुझे इसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना है. ठीक है? So brand equity, we can say it is a positive differential effect that knowing the brand name and consumer response to the product or service. यानी कि जैसे नाम लिया और भाई पर्सन का जो एटीट्यूड या we can say response जो है that is in the positive thing. जैसे एग्जांपल में मैंने ऐसे आजकल बोला कि चलो मंचूरियन मंगाया जाता है बीकानेर से, तो my whole family was saying yes please मंगवाओ. Why? Because the people are giving response in this way because of the brand equity they have in their mind.
right? So this is something known as brand equity, the value the consumers are perceived, ठीक है? So that is brand equity. Let's tell you one thing, that if your brand equity is very high, the people are willing, खुद से खरीदना चाहेंगे आपके प्रोडक्ट को, ठीक है? You don't need to spend a lot of money on advertisement as well, because the people are able to know about your brand. Example में, I already told this example, but I just want to repeat it once again. That for example, I am giving you 500 rupees. Any one of you, I am giving you 500 rupees. Why? Because you want to purchase one earphone. ठीक है? या फिर your parents give you 500 rupees to purchase one earphone. Now you have two options. One is local one, and the second one is Philips. Which product you are going to purchase? Which product you are going to purchase? Which product you are going to purchase? I'm asking something, that if your parents give you 500 rupees and you have option to purchase earphone, and one side you have Philips and the second side you have local company product, which one you are going to purchase? कौन सा खरीदोगे? बोलो. मैम लोकल वन. नहीं, I am asking Philips. Which one you are going to purchase? अगर तुम्हारे पास 500 रुपया मिला है तुम्हें, और तुम्हें फिलिप्स का प्रोडक्ट मिल रहा है ईयरफोन, और तुम्हें लोकल मिल रहा है, कौन सा खरीदोगे? फिलिप्स का मैम. ऑब्वियसली फिलिप्स का खरीदोगे. लोकल क्यों खरीदोगे? जब तुम्हें पता है कि लोकल ड्यूरेबल नहीं होगा, नाम नहीं जानते हो, ब्रांड कैसा है वैल्यू आपको में पता जाएंगे नहीं है. बिल्कुल, वी हैव मूव टुवर्ड द ब्रांड वैल्यू, जिसका मार्केट में वैल्यू है. अब एग्जांपल में अगर आप मान लीजिए कि यू हैव टू थिंग, ठीक है? अब आपके पास दो कंपनी है. एक है आपके पास सफारी, that is one of the company of the luggage, ठीक है? And the second one is American Tourister. Which one you are going to purchase? Now my question is, which one you want to purchase? American Tourister. American Tourister, ma'am. American Tourister, but I am just going toward the Safari. Why? You know why? Because the value of those both brand, value of the both brand is लगभग same है. The both brand value is around similar. And the second thing, the price varies. Like American Tourister का जो product है, that is expensive. But same चीज सफारी के साथ नहीं. It is little bit less expensive than American Tourister. As well as there are the other things. Like Safari, they are giving the 5 years warranty. But American Tourister is only giving 3 years warranty. So what I just want to tell you, that the brand equity or the brand value, जिसका जैसा ब्रांड वैल्यू होगा, हम वैसे ही प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. जैसे कि अगर हमारे पास दो इक्वल ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, तो फिर हम बाकी अदर एट्रीब्यूट्स की तरफ मूव कर जाएंगे कि बाकी और फैसिलिटी मुझे क्या मिल रहा है दोनों में. ठीक है? जैसे अब मैंने फर्स्ट चेक कर लिया, पहले तो फिलिप्स आ गया और आपके लोकल कंपनी आ गया, तो यहाँ तो ब्रांड के नेम से ही हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि लोकल नहीं खरीदना है, लोकल नहीं खरीदेंगे, फिलिप्स खरीदेंगे. लेकिन जब दोनों सिमिलर टाइप के ब्रांड होंगे, तो वी विल मूव टुवर्ड द अदर एट्रीब्यूट्स टू चेक और टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट्स. ठीक है? सो ब्रांड इक्विटी इज द वैल्यू ऑफ द ब्रांड, and we can say according to that the consumer will show the willingness to purchase the product, or they will show the positive response to purchase the product, right? So that is known as brand equity. Clear हो गया सबको brand equity क्या है? Brand equity सबको समझ में आया? अच्छा, brand equity जो है उसमें कुछ other points है कि brand equity कैसे build होता है, कैसे बनता है, कैसे लोग value बढ़ता है आपके brand का. So we'll cover this topic in the next class. I guess जितना भी मैंने आज आपको point बताया है, सब कुछ clear है? Yes, ma'am. Yes, Anyone ma'am. have any doubt? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. 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 See you all in the next class. If anyone have any doubt, please raise your hand and ask question. किसी को भी कोई doubt है तो please question raise कीजिए. No, ma'am. Okay. See you all in the next class. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Thank you.